आणि स्क्रीन शेअर करतो बघ रे. नाही ते थांबा. करू का शेअर? ओपन कर, ऑन कर, ऑन कर. सगळं फोनवर बघ ना. प्रोजेक्टरवरती लावता येत नाही. काय चॅनेलचं नाव? चॅनेलचं नाव काय? अरे सर्च कर BSIET BootCamp 1 year. ह्याला काय झालं आता? Good morning, everyone. So, welcome to the bootcamp. So, this is a bootcamp conducted by BSIET Pune under the Future Skills Prime project. So, before I start the topics in the bootcamp, let's first discuss what is this Future Skills Prime project is and what are the people involved in this. So, Future Skills Prime is actually a joint initiative by MIT and NASCOM. So, MIT is the Ministry of Electronics and Information Technology, and NASCOM for upskilling or reskilling. So, people who are not aware of these technologies, these emerging technologies, उनको उसकी awareness generate करना और उसके बारे में बताना, उसका basic से aware करना, and people who are already working in an industry with certain skills, उनको भी इसके बारे में aware करना. So both is included in this project, both for both IT and non-IT people. So it is not specific और ये सिर्फ IT वालों के लिए नहीं है या CSC वालों के लिए नहीं है, नॉन IT वालों के लिए है, जिनको टेक्निकल बैकग्राउंड कोचिंग उनको भी है, because these emerging technologies are currently overpowering other technologies. Then, so what is the so we discussed in this time is joint initiative by MIT and NASCOM. So the main objective of this project is to basically create an ecosystem of these trainings for continuous skill upgradation for the people of India. So continuously skill जो है अपग्रेड होती रहेगी लोगों की, जिनको नहीं पता उसके बारे में वो सीखेंगे, जिनको whether they are working in industry or not, सबको ये knowledge awareness generate करना है, सबका knowledge इस field में in specific fields में increase करना. So our bootcamp is focused on AI, which is one of the emerging technologies. उसके अलावा और भी है, cyber security है, big data analysis है, cloud computing है, blockchain है, and other technologies like that are there. और इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारा bootcamp कंडक्ट हो रहा है. Apart from bootcamp, there are two more programs, but those are for government officials. So those are government official training in artificial intelligence, basic and advanced. So those are for government officials only.
Now, in this boot camp, you are going to understand what is AI, little Python basics is there, then the whole workflow of ML. So not only theoretically you will understand, practically also we are going to do. So more emphasis will be on practical. The theoretical aspects जो theory चाहिए उसके लिए practical करने के लिए वो भी provide की जाएगी. So after it, and this is 40 hours duration course, 20 hours theory, 20 hours lab, but we conduct हम ऐसे conduct करते हैं कि साथ साथ में दोनों चलते हैं theory और lab साथ साथ. So so when you after this bootcamp, you will be able to understand what is AI, then what is machine learning, what is deep learning, what is computer vision, what is natural language processing, and other things. साथ में you are going to be able to create machine learning models after the completion of this bootcamp. So you will be able to write and implement a basic MLDA program using Python. So मुझे ये पता चला आप लोगों ने C पढ़ा है, right? Programming with C हुआ है आप लोगों का. C++ पढ़ा है आपको पढ़ा है? C++ नहीं पढ़ा है. Okay. Python भी नहीं पढ़ा है. So this was the brochure shared with the college and with you guys also. I hope. उसमें सब चीजें कवर की क्या who are eligible. Okay. Now coming to the important points related to this bootcamp. So as I said, 20 hours theory, 20 hours lab session. Then mock assessment will be there. I will share the mock assessment link on Wednesday, and you can take it by Friday because on Friday afternoon lunch के बाद we will have the final theory assessment. MCQ questions रहेंगे, ठीक है? 30 MCQ questions है, 40 marks for theory assessment. For lab assessment, a problem statement will be given और वो groups में करना है. So I don't know the exact count, मेरे को exact count नहीं पता है. मेरे को सुबह सोनल सर ने 180 बोला. Registration online जो registration में around 140 में है. So based on that count, per group 10 people could be there. Okay, minimum 10 people. So you have to do the assignments as well as lab assessment in groups. So हर group से एक submission आना चाहिए हर lab assessment. Lab assessment will be there 40 marks का, जो machine learning में पूरा problem statement रहेगा. Apart from that, daily उसमें कुछ class assignment रहेगा for you to do. जो भी topics cover होंगे रोज उसका से related एक assignment रहेगा जो आपको करना है. आगे पूरे ग्रुप में करना है, ग्रुप सबमिशंस करना है. So to make it easier to choose group, आप अगर जानते हैं एक दूसरे को, so you can make if you have friends in here, so आप अपना friends का भी group बना सकते हैं. But at least 10 people would be there. So जैसे पिछली बार हमने किया था सर एक WhatsApp group will be there. And I will share the assignment on that WhatsApp group. बाकी जो code है presentation है उसकी Google Drive है मेरे पास, वो मैं share कर दूँगा. So I do not have to share it again and again. वो आपको अपने Google Drive में copy करनी पड़ेगी. And then जो mostly हम लोग code करेंगे यहाँ पे भी हम Google को बाद में करेंगे. Okay, attendance is important. 100% attendance होनी चाहिए for certification. So after and overall, so see, लेकिन मैं आपको explain कर देता हूँ. So this is the package of marks. So theory exam, theory assessment, 30 MCQ question, total 40 marks. Lab assessment 40 marks.
and 20 marks internal assessment जो मेरी assignment होगा उसके basis पे. And so overall 100, and overall you have to score more than 40% marks to get the certificate. And along with the certificate, you will also get a scorecard. Scorecard will be the certificate के साथ. And अगर आपने 95% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं ओवरऑल, शेयर तो शेयर शेयर है, सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग दिख रहा है, वो 15 में दिख रहा है, तो वो कैसे है? शेयर्ड है, शेयरिंग और स्क्रीन एंड ऑडियो. शेअरिंग इथं दिसत तर होतं. हाँ एंटायर स्क्रीन. हाँ सर इसको सेलेक्ट बघ बघू झाली का? झाली का झाली का? okay. So if you score more than 95%, तो आपको एक additional certificate for excellence मिलेगा. Okay. Now the important date, आज ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 4 अगस्त. 8 अगस्त को ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, बूट कैंप खत्म हो जाएगा. मॉक टेस्ट के लिंक मैं पहले से को शेयर कर दूंगा. That is 6 अगस्त. So until Friday morning you can do the mock assessment. And lab assessment जो है मैं वो भी कल या परसों वेडनेसडे मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा. तो वो भी आपको हो सके तो फ्राइडे तक कर दें सब, नहीं तो मैक्सिमम संडे इवनिंग तक करते हैं क्योंकि मंडे को असेसमेंट चेक करेंगे. तो संडे तक सारे असेसमेंट और असाइनमेंट सबमिट हो जाएंगे. And then theory assessment is again on Friday after lunch. So the team, the future skills prime team at CLAB is comprised of these people. So starting with Mr. Suresh Sikka, he is the chief investigator. Then Ms. Mr. Deshpande, she is co-chief investigator. Then Mr. Sandeep Sahane, he is the head of Lead Resource Center, that is CLAB Pune for AI technology. So and Ms. Vishali Jain is the faculty as well as the course coordinator, and myself, colleague there, was one faculty, and Mr. Samak Shinde, my colleague, is another faculty. So this was about the Future Skills Prime project. So interview information, what is it? किसका initiative है? And all that information. So this is directly in the purview of IT. So whatever instructions regarding the boot camp, the certificates and all, we get from IT directly. So let's start with our first topic. तुमने स्क्रीन ऑफ किया? ऑफ तुमने किया? मैं कुछ नहीं ऑफ किया, यहाँ पे आता है वो लिखा हुआ. कौन है इधर? प्रोजेक्टर मैंने कुछ नहीं किया. वो लाइव स्ट्रीमिंग पर बराबर चल रहा है. प्रोजेक्टर कैसे?
वो निकाल के फिर से हो सकता है कि यूज हो सके। मुझे भी इसमें से कुछ पता नहीं। अब वो डुप्लीकेट में वो लाइव स्ट्रीम चल रही है, वही चक्कर है ना। अब मैं इसमें शेयर करूँगा। So we will start with our first topic, that is introduction to AI. So पहले मैं start करूँ, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप AI के बारे में कितना जानते हैं? What do you think is AI? What is AI? AI और artificial intelligence क्या होता है? Any idea? Anyone? अच्छा, इंटेलिजेंस से क्या समझते हो? इंटेलिजेंस से क्या समझते हो? इंटेलिजेंस क्या होता है? गलत सही कुछ भी बोलो, कुछ ना कुछ सीखोगे। गलत भी बोलो। कभी ये सोचा है हमारा दिमाग कैसे काम करता है? How does our brain works? हमारे बॉडी में 24/7 डेटा कलेक्शन होता रहता है, डेटा कलेक्ट होता रहता है। कैसे होता है? फाइव सेंसेस सुने, टच, टेस्ट, उससे डेटा कलेक्शन होता है। वो डेटा कलेक्ट होके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, उसके बाद ब्रेन में जाता है। नाउ ब्रेन जो है, दिमाग जो हमारा, वो सब डेटा को एनालाइज करता है, उसमें से जो फालतू इंफॉर्मेशन उसको भूल जाता है, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको रखता है। दैट इज योर इंटेलिजेंस। जो भी आपके अभी तक आपके लाइफ में जो भी आपके इंसिडेंट्स हुए, एक्सपीरियंसेस हुए, वो सब उसको रखता है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको रखता है, ताकि किसी क्रूशियल टाइम में भी वो यूज में आ सके। और वो इतनी फास्ट यूज करता है कि आपको भी समझ नहीं आती कि उतनी जल्दी कैसे दिमाग में काम करता है। सो दैट इज इंटेलिजेंस। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है? उस इंटेलिजेंस को अगर कोई मशीन मिमिक कर सकते, उस इंटेलिजेंस को अगर कोई मशीन कर सकता है, यूटिलाइज कर सकते, या उसी सेम वे में कोई मशीन अगर वर्क कर सकते, सो दैट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो क्या हुआ? मशीन अगर हमारा जो ब्रेन है उसकी जो प्रोसेसिंग पावर कैपेबिलिटीज है उसको अगर मिमिक कर पाता है या कॉपी कर पाता है in a sense, then that machine is said to be artificial intelligence. So introduction of AI में we are going to cover these topics. So first of all, ये जो है प्रॉपर डेफिनेशन है AI की, एंड जैसे आपने की आप फोटो देख रहे हैं,
He is known as the father of AI. He coined the term artificial intelligence. And उनका नाम है प्रोफेसर जॉन मैकार्थी. So उन्होंने जो definition दिया AI का, that is science and engineering of making intelligent machines. So machines जो पास डेटा को लेके उसमें से पैटर्न्स फाइंड आउट करके या इंफॉर्मेशन निकाल के उसको डेटा को एनालाइज करके उसमें से इंसाइट्स निकाल के इंफॉर्मेशन निकाल के उसको अगर यूटिलाइज कर सकता है, वैसी मशीन्स को बनाना. और उस मशीन को बनाने के पीछे जो साइंस इन्वॉल्व है, दैट इज योर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, समझ आया क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? समझ आया सबको? और भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, जैसे कि साइंस ऑफ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा. ब्रेन के लिए जो डेटा है वो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, उसमें जो डेटा सेंसर से कनेक्ट हो वो डेटा है. यहाँ जब हम एआई की बात करते हैं तो डेटा, तो उसमें पास्ट डेटा जो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है या वी कैन कनेक्ट. उसके कई सारे एग्जांपल हैं. हाउस प्राइसेस का आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, कार प्राइसेस का डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, इमेजेस का डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, देन टेक्स्ट, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह उनका डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो. So, उन सब डेटा से अगर मशीन कैसे लर्न कर सकता है, वो मशीन को प्रोग्राम कैसे किया जा सकता है उन सब डेटा से लर्न करने का, दैट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Then making a system learn from the past data, or a field of study that focuses on developing technology that allow machines to perform tasks that are typically associated with human intelligence. Okay. So this is what AI is. Now, ये तो AI की डेफिनेशन है. अब AI जो है वो नया नहीं है, AI काफी पुराना है. सो AI के साथ साथ थोड़ा कंप्यूटर की भी हिस्ट्री हम जानते हैं. आप लोगों ने पढ़ी है कंप्यूटर की हिस्ट्री थोड़ी बहुत? ओके. सो 1921 में सबसे पहले जो एक प्ले था, साइंस फिक्शन प्ले वाज रिटन बाय दिस चेक प्लेयर कैरल चेक with the title given as Rosen's Universal Road. इस उस play में he introduced the concept of artificial people, which he named robots. So वो play जो है वो first known use of the word robot. मतलब उस play में सबसे पहली बार robot term का use किया गया. After that 1929 में एक Japanese professor मोटो निशिमुरा ने एक रोबोट बनाया जिसका नाम था धातु तेंसु. Then 1949 में कंप्यूटर साइंटिस्ट एडमंड कैलिस बर्कली उन्होंने एक बुक पब्लिश की, जायंट ब्रेन्स और मशीन्स दैट थिंक, which compared the neural models of computers to human brains. Now, किसी को पता है पहला कंप्यूटर कब आया था? See, some say, people says चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया, बट वो कंप्यूटर पब्लिक यूज में कभी नहीं हुआ आया था. सो उनको क्रेडिट दिया जाता है बट उतना नहीं. बट इन 1940s वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन बनाई which later became the computer, जिसका नाम था एनिग्मा. उस मशीन का काम था बेसिकली जो जर्मन मैसेजेस है उनको डिकोड करना. सो 1943 to 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 था. 45 या 48 तक था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट अराउंड दैट टाइम. सो एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटर एनिग्मा बनाया, which is known as the first computer.
उसके बाद से फिर कंप्यूटर की डेवलपमेंट शुरू हुई. So after Alan Turing created computer, he started thinking of artificial intelligence also. So in 1950, he published a paper or journal, Computer Machinery and Intelligence, which proposed a test of machine intelligence called the imitation game. Imitation game, करके few years back movie भी आई थी. It was based on that only. On Enigma कैसे बना है, and during how was it involved and what it do, तो उस सब चीजों पे थी. But उसका famous name जो है in scientific world is Turing test. Turing test सुना है आपने बोला कभी? Turing test का सिंपल सा टेस्ट था, अभी भी यूज होता है लेकिन उसका मॉडिफाइड हो गया प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से. तो ट्यूरिंग टेस्ट में क्या है, आपके पास दो रूम है, दोनों रूम जो है पर्दे से कवर्ड है. एक रूम में रोबोट है, एक रूम में ह्यूमन है. आपको नहीं पता किस रूम में कौन सा है. व्हाट एंड यू आर इफ यू आर द इवैल्यूएटर, व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप इवैल्यूएटर हैं तो आपको दोनों रूम में जाके के बाहर एक साइड से क्वेश्चंस पूछने, सेम क्वेश्चन पूछने, दोनों रूम से आपको आंसर मिलेंगे. अगर आप उन दोनों आंसर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, इसका मतलब जो मशीन था उसने इवैल्यूएटर को फूल कर दिया इन थिंकिंग कि वो ह्यूमन है. दैट मींस वो मशीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है. अदरवाइज अगर दोनों में आंसर में कुछ डिफरेंस दिखता है, दैट मींस वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा किस रूप में ह्यूमन है, किस रूप में मशीन है. सो उस केस में मशीन was not able to fool the evaluator, or machine is not artificially intelligent. So basically ये एक टेस्ट था जो एलन ट्यूरिंग ने प्रपोज किया, एंड उसके बाद से it यूज होता है अभी भी होता है, बट मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ दिस, मॉडिफिकेशन में टेक्नोलॉजी के हिसाब से. Then in 1952, Arthur Sample developed a program to play checkers. Checkers खेला है? बोर्ड देखा है checkers का? कभी कभी चेस का बोर्ड खरीदते हो तो उसके पीछे checkers का बोर्ड होता है सामने. So वो गेम के लिए बोर्ड लिखा है Arthur Sample, जो वो गेम अपने आप खेल सकता है. Then in 1955, John McCarthy, during a workshop at Dartmouth University, he coined the term artificial intelligence and used that term there. और उसके बाद से artificial intelligence जो है popular usage में use होने लगा. After that, in 1958, John McCarthy created LISP. So LISP is short for list processing. So it is still in use, but now not much that popular. Python is totally converted area in the AI. So it was the first programming language for AI research. Then in 1959, Arthur Samuel created the term machine learning. Okay. When doing a speech about teaching machines to play chess better than humans who programmed. So machine learning term created here, but there was speech there on how to train machines to play chess. Then in 1961, पहला industrial robot Unimate started working in General Motors assembly line. General Motors किसकी कंपनी पता है? किस चीज की? शॉर्ट में जीएम बोलते हैं. कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार बनाती. सो वहाँ पे यूनिमेट यूज हुआ था इस टास्क के लिए, टू ट्रांसपोर्ट डाई, केसिंग्स एंड वेल्डिंग पार्ट्स.
क्योंकि वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है एंड दे आर कंसिडर्ड डेंजरस फॉर ह्यूमंस। तो वहाँ पे ह्यूमंस को यूनिवेट से रिप्लेस कर दिया। Then in 1966, Joseph Weizenbaum created the first chatterbot, जिसको बाद में शॉर्ट करके चैटबॉट किया, फिर वर्चुअल असिस्टेंट हुआ। नाउ उसको आप चैट जीपीटी या जेमिनी या वो नाम से देखते हो, बट उसका कलेक्टिवली नाम है कन्वर्सेशनल है। सो उनकी बिगनिंग यहाँ से हुई थी चैटबॉट से। सो ये जो फर्स्ट चैटबॉट था उसका नाम था एलाइजा एंड इट वाज अ साइकोथेरेपिस्ट, मतलब थेरेपी के लिए यूज था। So it used NLP techniques to converse with humans. And then we have taken about it on the paper what is NLP. NLP is short for natural language processing. Okay. Then in 1968, Alexei Marchenko, he was a Soviet mathematician, and he published a paper called Group Method of Data Handling in the journal Mathematica, जो बाद में डीप लर्निंग में यूज हुआ मैथमेटिक्स में। डीप लर्निंग के मैथमेटिक्स में यूज हुआ। Then in 1979, ट्रिपल एआई was founded. पहले वो नाम था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बाद में चेंज होते हो गया एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो है वो फेमस जर्नल है जिसको एआई से रिलेटेड पेपर पब्लिश होते हैं। Okay, then in 1980, ट्रिपल आई का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेड वाज स्टैनफोर्ड पे, एंड इन द सेम ईयर एक फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम लॉन्च हुआ इंफॉर्मेशन मार्केट, जिसका नाम था एक्सकॉन। उसका मेन टास्क था कि अगर आपको कंप्यूटर खरीदना है तो आपके रिक्वायरमेंट से कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट आप कौन सा आपको चाहिए वो सजेस्ट कर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। नाउ यहाँ ये समझने की बात है 1980s में जो हम डेटा हैंडल कर रहे थे 2000 केबीज और इवन बाइट्स और किलोबाइट्स, और उस डेटा को हैंडल करने के लिए जो कंप्यूटर यूज होते थे दे वेर एक मंजिला इमारत के बराबर स्पेस होता था उस टाइम पे। कंप्यूटर एक मंजिला इमारत में कंप्यूटर पूरा हाउस होता था, वहाँ ऑपरेटर रहता था जो आपको प्रोग्राम रन करना उसके लिए जो इनपुट चाहिए वो एक पंच कार्ड होता है, उसको आप ऑपरेटर को दोगे, वो इनपुट कंप्यूटर में इनपुट करता था। उसके बाद आप शाम में हो आपको शाम में आउटपुट मिलेगा उसको। सो उतना बड़ा कंप्यूटर था तो उसमें जो कंपोनेंट्स थे दे वर ऑल कॉस्टली, और ये कंपोनेंट्स कौन बनाते थे, कौन सी कंपनी बनाती थी? आपकी आईबीएम है, एटीएम है, ये सब कंपनीज थी जो उस टाइम पे कंप्यूटर बनाते थे। इंटेल भी आ गया था। Then in 1981, the Japanese government allocated $850 million for fifth generation computer project, जिसका main objective था computers to create computers that could translate, converse in human language and express reasoning on a human level. 1980s में $850 million, जिसका अभी $2 billion के आसपास। 2 बिलियन अगर $2 बिलियन भी रखो तो उसको रुपीस में कन्वर्ट करोगे कन्वर्जन रेट के हिसाब से तो अराउंड 100 बिलियन 180 बिलियन रुपीस 180 बिलियन रुपीस। सो लॉट ऑफ मनी वाज देयर। Then in 1985, autonomous drawing program Aaron was launched and was demonstrated at AAA conference. And then in 1986, Ernest Hickman and his team created or demonstrated
द फर्स्ट ड्राइवरलेस कार। अब ड्राइवर वहाँ उसमें क्या कंडीशंस थे कि जो रोड जिस पे वो चलेगी उस रोड पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा, मतलब कोई भी रोड क्रॉस नहीं कर रहा है, कोई पेड़ नहीं है, बीच में कोई गाय नहीं है, नथिंग। पूरी रोड एम्प्टी है, ना कोई गाड़ी है आसपास, पूरी रोड एम्प्टी है, ना कोई स्पीड हो। तो उस केस में वो गाड़ी जो है ड्राइवरलेस कार जो है इस वो 55 माइल्स पर आवर तक रन करती है। नाउ बिफोर आई मूव, कुछ कुछ प्रोडक्ट 1980s to 1990s में ऐसे बने, रिसर्च हुए, बट लॉट ऑफ कंडीशंस हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा आप लोगों ने सी पढ़ा है, आप लोगों ने ये पढ़ा है सी का लॉन्च हुआ था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि 1980s में कंप्यूटर वर्ल्ड में बहुत चेंजेस आए थे। सी 1978 में लॉन्च हुआ था, देन 1983 में सी प्लस प्लस लॉन्च हुआ था। और जब सी प्लस प्लस लॉन्च हुआ उससे पहले जो है जो भी हार्डवेयर कंप्यूटर के यूज होते थे वो लिस्प बेस्ड हार्डवेयर थे। 1983 के बाद तो सी प्लस प्लस लॉन्च हुआ, उसके बाद सी प्लस प्लस बेस्ड हार्डवेयर बनने लगे, और अभी भी जो हम हार्डवेयर यूज करते हैं कंप्यूटर्स में वो सी प्लस प्लस बेस्ड ही है। ठीक है, सो जो लिस्ट हार्डवेयर का जो मार्केट था वो 80s में खत्म हुआ, सी प्लस प्लस ने उसको ओवरटेक किया, उसके बाद 90s में आपको पर्सनल कंप्यूटर भी आ गया। सो सी प्लस प्लस हार्डवेयर का एडवांटेज ये हुआ कि कंप्यूटर का साइज कम हो गया, प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ी और साइज भी कम हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो पीरियड था 1980s to 1990s, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च वाइज जो है उतना अच्छा नहीं, क्योंकि जो रिसर्च चल कर रहे थे, एडवांस रिसर्चेस जो चल रहे थे उसमें सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा। सो इसीलिए कई कई जगह पे आप जो टर्म यूज हुआ सुनोगे, दैट इज एआई वेंडर्स, बिकॉज no research was giving any good result. Now in 91 में कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड में सबसे बड़ा चेंज आया, हार्डवेयर का चेंज नहीं था वो। लेट मी गिव यू अ हिंट, अभी के टाइम में अगर वो आपके फोन में ना हो वो इन्वेंशन, तो आपकी हालत खराब हो जाती है। उसके बिना आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं कर सकते, उसके बिना आप कुछ गूगल पे सर्च नहीं कर सकते। क्या इसकी बात है? यस, वर्ल्ड वाइड वेब लॉन्च हुआ था 91, उसका इफेक्ट ये हुआ कि डेटा अब उसके बाद से लोकलाइज नहीं रहेगा, अब किसी भी कंट्री का डेटा आप एक्सेस कर सकते थे थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब। सो उस एक साल में जो डेटा रिसर्च में जो डेटा की बात करते हैं वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ। एबीज की बात कर रहे थे, धीरे धीरे वहां से डेटा इंक्रीज होना जो शुरू हुआ वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ। 90s में हम केबीज मैक्सिमम एमबीज की बात करते हैं, देन अर्ली 2000 में सिर्फ एमबीज, फिर बाय द एंड ऑफ 2000 और नियर 2008-9 हम जीबीज पे आते हैं, और नाउ उसके बाद उसके नेक्स्ट डेकेड में 2017-18 तक हम टीवीज में आ गए, फिर उसके बाद से हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात करने लगे। सो डेटा ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ, और आपके जो एआई ने जब 90s के बाद रिसर्च पकड़ा, इट हैजंट स्टॉप रिसर्च पे रिसर्च, जो सक्सेसफुल रिसर्च हुए हैं उसके जो रिजल्ट्स हुए हैं वो अभी तक रुके नहीं है, एंड दे आर कंटिन्यूअसली रिसर्च। सो 91 में आपका वर्ल्ड वाइड वेब आया, उसी के आसपास पाइथन वाज आल्सो लॉन्च्ड। सो पाइथन जो है 91 में जनरल पब्लिक यूज के लिए लॉन्च हो गया था। ठीक है, एंड यू विल सी जैसे 1997 में आईबीएम ने डीप ब्लू डेवलप कर, उससे पहले डेवलप हो गया था। 97 में डीप ब्लू जो है
उसने उस समय के जो चेस चैंपियन थे, वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव, उनको पब्लिक मैच में मतलब टीवी पे ब्रॉडकास्ट हुआ था मैच, चेस मैच, उसमें हराया। So that is the first program to beat a human chess champion. Then 2000 में first robot आया जो human emotions, facial expression से mimic कर सकता है। तो उसका नाम था इसमें। अब उसमें क्या क्या mimic human emotion, facial expressions से mimic करने के लिए क्या क्या यूज करता था वो? Eyes, mouth, ears and eyebrows. Then 2003 में नासा ने का मार्स मिशन हुआ था। उसमें मार्स का जो सरफेस को नेविगेट करने के लिए दे यूज एआई विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। देन 2006 से आपका ट्विटर या ओटीटी वेबसाइट्स जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह दे स्टार्टेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर advertising as well as your UI UX, yeah, user experience developers. जो इंटरफेस आपको मिलता है ओटीटी नेटफ्लिक्स उसके लिए भी। देन 2010 में माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च द Xbox 365 गेमिंग कंसोल है जिसमें पहली बार जो है जेस्चर से या बॉडी मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। जेस्चर से बॉडी मूवमेंट को इट कैन ट्रैक एंड ट्रांसलेट इनटू गेमिंग डायरेक्शन। जैसे अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है वीडियो की तरह, बट कंसोल हाथ में जॉयस्टिक पकड़ के वो टेनिस नहीं, दैट इज योर एआई आल्सो। क्योंकि जो भी आप जेस्चर कर रहे हो, जो भी बॉडी मूवमेंट कर रहे हो, उसको एनालाइज करके उससे क्या होगा वो गेम में मिमिक कर। देन 2011 में एप्पल ने सीरी लॉन्च किया जो कि पहला वर्चुअल असिस्टेंट था। उसके बाद फिर सब किया गूगल का आया, ओके गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट का तो जाना था, सो और भी थे। नाउ वो सब अब रिप्लेस हो गए। सीरी का नाम तो सीरी है, एलेक्सा भी वगैरह भी आया अमेज़न का। उसके बाद सीरी का नाम चेंज नहीं हुआ, वो फिर गूगल अब जेमिनी से रिप्लेस हो गया, कोटाना कोपाइलट से रिप्लेस हो गया। सो these things were there. Then 2012 में two researchers from Google, Jeff Dean and Indro Ng. Indro Ng जो है is a quite famous name in the field of artificial intelligence. Okay, so they trained a neural network, a deep learning concept to recognize cats by showing images and no background information, और कोई information नहीं दी, सिर्फ वो इमेज दिया, उसके बेसिस पे मशीन्स ट्रेन किए to identify cats in the images. Then 2016 में Hansen Robotics ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया जिसका नाम था सोफिया। उसके पास and it was the first robot that has a citizenship of a country, जिसके पास कंट्री की सिटीजनशिप है। कौन सी कंट्री की सिटीजनशिप है पता है आपको? सोफिया जो रोबोट है वो सऊदी अरेबिया का है, सऊदी अरेबिया के सिटीजनशिप है उसके पास। And it is also the first robot citizen, so we discussed that. Then 2018 में अलीबाबा जेट नाम की कंपनी उसके एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई ने ह्यूमन इंटेलेक्ट को बीट करके स्टैनफोर्ड के रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन टेस्ट पे। इन 2019 में Google surfaced the reach grandmaster of the video game StarCraft 2 or performing conquered 0.2% of the gamers or human players. Then 2020 में OpenAI ने GPT 3 का बेटा टेस्ट करना शुरू किया था
एंड GPT-3 जो है it was the beginning of your chat GPT. अच्छा, इंडिया का जो चंद्रयान 3 का हुआ था, चंद्रयान 3 वाला मिशन का था, अराउंड दिस टाइम होगी ना, 2020 में 22 के आसपास ही था। तो उसमें भी दे नीड टू लैंड ऑन द डार्क साइड ऑफ द मून, जहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ती। वहाँ भी टू फाइंड द एप्रोप्रिएट प्लेस, तो कहाँ पे लैंड करना है, कहाँ पे वो जब रोवर लैंड करेगा तो प्रॉपर नहीं होगा, उल्टेगा नहीं पलटेगा, तो वो भी एआई के यूज से एआई लगा हुआ है उन्होंने, मशीन ट्रेन किया हुआ था एआई टू आइडेंटिफाई द लोकेशन on its own without any human intervention. Then 2021 में ओपन एआई डेवलप कर, जो बेसिकली अगर आप उसको फोटो दोगे तो उसका कैप्शन उसमें क्या हो रहा है वो बता सकता है, या बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब जो भी क्वेरी आपने पूछी है चैट जीपीटी से या जनरेटिव एआई से, तो डॉगी के इसको कुछ भी अगर आपने इमेज जनरेट करने के लिए बोला उसको तो वो इमेज क्रिएट भी करता है। ओके, apart from this, last year OpenAI launched Sora, जिससे आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, वीडियो जनरेट कर सकते हो। So ये थी AI की history. Next we will see the different types of artificial intelligence. AI different types को हो सकते हैं, उसके लिए दो फैक्टर्स, वन कैपेबिलिटीज, वन फंक्शनैलिटीज। कैपेबिलिटीज का मतलब व्हाट इट कैन डू, वो क्या कर सकता है, एंड फंक्शनैलिटीज मतलब व्हाट इट डज, वो क्या करता है, क्या कर सकता है और क्या करता है, ये दो डिफरेंस है। सो बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज यू हैव नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। सो अभी तक जो भी एआई प्रोडक्ट्स हैं, they all comes under narrow AI, जो सोरा वगैरह है, चैट जीपीटी वगैरह है, they are bordering between narrow AI and generative AI, general AI. They are moving towards general AI. So narrow AI it learns from past data and make predictions. ठीक है, so चैट जीपीटी के केस में भी पुराना डेटा से लर्न किया और उसके बेसिस पे वो स्टेटमेंट जनरेट कर रहा है। जनरल एआई में it is able to mimic human intelligence, मतलब past data से learn करके it is making prediction or it is taking decision. Apart from that, it will also be able to mimic human emotions, and not just simple emotions, complex emotions also. So that is your general AI. Then you have super AI. Super AI आपका जनरल AI तो होगा ही है, उसके साथ साथ it will be self aware, मतलब it will be able to make decision on its own without human intervention, without any help of the humans. It will decisions के अलावा वो अपने आप ही लर्न करेगा, उसमें उसको ट्रेन करने में ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। It will analyze the data itself, meaning मतलब आप उसको डेटा प्रोवाइड नहीं करोगे, डेटा कलेक्शन वो खुद ही करेगा, खुद ही डेटा कलेक्ट करेगा, खुद ही डेटा क्लीनिंग वगैरह करेगा, खुद ही डेटा एनालाइज करके खुद ही इंसाइट से जनरेट करेगा, कहीं भी किसी भी स्टेप में ह्यूमंस की जरूरत नहीं है। Then based on functionalities वो क्या क्या कर सकता है या क्या क्या करता है। So reactive machine मतलब
उसने पास डेटा से लर्न किया, जो पूरा पिछला डेटा है जिसने एक्सपीरियंस है उससे लर्न किया एंड जस्ट प्रेडिक्टिंग। इट इज नॉट स्टोरिंग एनीथिंग, वो कुछ डेटा स्टोर नहीं कर रहा है, वो उसने पास डेटा से लर्न किया और अब वो सिर्फ प्रेडिक्शन कर रहा है, जो कि आपने जनरली और मोस्टली जो अभी है वही करते हैं। अपार्ट फ्रॉम जनरेटिव एआई, जैसे आपका हाउस प्राइस प्रेडिक्शन हो गया, पुराने डेटा से उसने लर्न किया कि क्या पैटर्न है, कितने रूम है, कितने बालकनी, उसके बेसिस पे हाउस प्राइसेस क्या हो सकते हैं। उसके बाद आपने एक नया हाउस का डिटेल उसको दिया, उसके बेसिस पे उसने उस हाउस का प्राइस प्रेडिक्ट किया। सो दैट इज योर रिएक्टिव मशीन। देन लिमिटेड मेमोरी में आता है सेल्फ ड्राइविंग कार और ड्राइवरलेस कार। उसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। ड्राइवरलेस कार इज बेस्ट, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है ड्राइवरलेस कार में, देयर आर कैमरास एंड सेंसर्स इन दैट जो कंटीन्यूअसली डेटा कलेक्ट कर रहा है। मतलब रोड पे जो भी उसका डेटा, फोटो या सेंसर से डेटा कलेक्ट किया कि जो गाड़ी है बगल में या पीछे कितना डिस्टेंस पे है, कितना स्पीड पे चल रही है, वो सब कैलकुलेशन किया। सामने से पेडेस्ट्रियन कितने डिस्टेंस पे पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है रोड को, सो या सिग्नल जो है ट्रैफिक सिग्नल कितने डिस्टेंस पे है या स्पीड ब्रेकर है, वो सब आइडेंटिफाई करना उसके लिए इमेजेस और सेंसर्स का डेटा है। तो वो फॉर अ लिमिटेड टाइम स्टोर करता है, साथ साथ लिमिटेड की मेमोरी स्टोर करता है। क्योंकि ड्राइवरलेस कार्स में आपका एक मेमोरी यूनिट होता है जो डेटा को सेव करता है। अब उसमें वो छोटा ही रहता है, आप ज़्यादा डेटा सेव नहीं कर स्टोर करने के आपको ज़्यादा बड़ा मेमोरी यूनिट चाहिए। इवन तो अभी 2 TB का भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो कभी स्मॉलर इन साइज होती है, बट वहाँ पे वो इमेजेस और सेंसेस का जो डेटा स्टोर कर रहा है इट मे गो बियॉन्ड 2 TB। सो अगर हम ज़्यादा मेमोरी स्टोर करेंगे उसके लिए ज़्यादा बड़ा मेमोरी यूनिट चाहिए, तो वो कार के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा। एंड we do not we do not require to store all the data। जो भी इम्पोर्टेंट एक्शन लिया किस बेसिस पे वो एक्शन लिया वो सब इंफॉर्मेशन अगर वो स्टोर करके रखेगा दैट इज एनफ। सो आफ्टर वो डिसीजन ले लेता है, जैसे कि स्पीड ब्रेकर आया, फोटो वगैरह उसको लिया, पीछे जो गाड़ी है साइड में जो गाड़ी कितना डिस्टेंस पे है वो डिस्टेंस मेंटेन करता है, वो सब कैसे मेंटेन करना है। उसके बाद पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको सिग्नल देना कि मैं गाड़ी को क्रॉस को करने वाला हूँ स्पीड ब्रेकर से ऊपर जाने के लिए, हेडलाइट्स ब्लैक हेडलाइट्स को वो ऑन करने पड़ते हैं या ब्रेक करने पड़ते हैं टू शो दैट कि आई एम स्लोइंग डाउन द कार। सो वो सब जो भी एक्शन लिया वो सब वो स्टोर करेगा, रेस्ट ऑफ द डेटा वो हटा देगा। सो नेक्स्ट टाइम जब स्पीड ब्रेकर आएगा तो वो उसको रेफर कर सकते हैं कि पिछली बार जब स्पीड ब्रेकर आएगा तो क्या एक्शन लिया, तो सिर्फ उस टाइम को वो क्या रहेगा वो एक्शन लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस सिचुएशन से कम अक्रॉस हो गया, वो उस सिचुएशन को पहले गो थ्रू कर चुका है। सो दैट इज लिमिटेड मेमोरी। एक तो लिमिटेड टाइम के लिए स्टोर है, साथ में लिमिटेड मेमोरी स्पेस जिसमें डेटा स्टोर। Then we have theory of mind. Again, theory of mind is similar to your general AI. वो human emotions भी mimic कर सकता है। And self awareness, again AI will become self aware, will take decision on its own without human intervention, without consulting humans also। So जो AI से रिलेटेड फियर आता है कि एक दिन रोबोट्स जो है एआई जो है वो दुनिया का कंट्रोल कर लेगा, दैट फियर कम्स फ्रॉम योर सुपर एआई और सेल्फ अवेयर एआई। ओके, देन वी हैव द now different
AI, we have seen what is AI, technique which enables machines to mimic human behavior. Human behavior is another human intelligence and emotion. Then, so artificial intelligence जो एक broader area है. हम इस बोर्ड कैंप में उसमें सिर्फ डेटा साइंस का एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं. There are other aspects also in artificial intelligence. So data science के aspect में machine learning जो है, it is a subset of artificial intelligence. So subset of AI technique which uses statistical methods to enable machines to improve with experience. और machine learning में जो algorithms होते हैं, those are generally data for linear algebra, probability and algebra. Probability means not just basic probability, probability distributions. The but probability distribution mostly data analysis aspect में ज़्यादा होता है. Machine learning algorithm में probability का ही ज़्यादा होता है. So machine learning and even deep learning also, यही mathematics usually, but deep learning में we also use calculus, differentiation वगैरह use होता है. वो ML में भी use होता है. So but ML में statistical method क्या है? So using some it also uses some statistics also. So डिटेल में देखेंगे कि मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है. कल we talk about machine learning. Then deep learning जो है, it is again a subset of machine learning which uses neural network. Now neural network क्या है? AI का जो आइडिया है ना, वो वहीं से आया कि how we can mimic our brain in machines. ठीक है? So machine learning में उतना ज़्यादा उसमें deep learning है, but deep learning में we went one step further to mimic our brain. अब brain को तो mimic करने के लिए neural network जो है basically it is mimicking our neural systems. हमारे body में जो neural system है, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो 98 में neural systems होते हैं. हर बॉडी में हर जगह पे न्यूरॉन्स हैं. टिप्स पे भी न्यूरॉन्स हैं. वहाँ से वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन डेटा ट्रांसफर होके वो पहुँचता है. सो जो न्यूरॉन से न्यूरॉन डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज मिमिक्ड इन न्यूरल सिस्टम्स और न्यूरल नेटवर्क्स. सो वो चीज़ डीप लर्निंग में भी होता है. ओके, सो व्हाट अदर डिफरेंसेस आर देयर बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग? So, machine learning is an application or subset of AI, and it is allowed to make decisions from data or from past data. Okay, now machine learning जो है वो structured और semi structured data पे यूज होता है. पता है आपको structured data क्या होता है? कोई भी टेबुलर डेटा, टेबल में जो डेटा है कोई भी, वो आपका एक्सेल शीट का भी डेटा हो सकता है, सीएसवी हो सकती है. उसके अलावा इट कैन बी योर जेसन फाइल आल्सो, इट कैन बी योर रिलेशनल स्कीमा आल्सो, डेटाबेस का जो भी स्कीमा वगैरह होता है. उसके अलावा एसक्यूएल क्वेरी टेबल, वो सब भी आपका सब स्ट्रक्चर्ड डेटा है. देन सेमी स्ट्रक्चर में जेसन जो आपका सेमी स्ट्रक्चर में आता है, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है. वैसे ही आपका एक्सएमएल है या उस टाइप के जो डेटा को सेमी स्ट्रक्चर में आते हैं, कि जिनको स्ट्रक्चर में टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब बिना कन्वर्ट किए डायरेक्टली यूज किया जा सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड.
वो AI वो ML में उन्हीं डेटा पे बेस्ड होता है and small data set. Small मतलब up to 5,000 rows. Okay. Then you have deep learning. So again, subfield of machine learning. Now this is your neural network. अब इसमें हर जो यूनिट that is every circle is called a neuron or perceptron. Okay, and deep learning works well for unstructured data. Unstructured data क्या होगा? Yes, images और या जैसे आपका सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह, टेक्सचुअल डेटा या इमेज का डेटा या ऑडियो डेटा या वीडियो डेटा, those are all unstructured data. So those way deep learning works best. So and it works based on large data set. Machine learning smaller data set up to 5,000 rows per it will work best, but deep learning works well on large data. And since it is processing large data, it requires large computing power. So वो भी हम deep learning जब हम overview लेंगे उसमें थ्योरी जो उसको कवर करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे. So ये आपके machine learning deep learning हो गया. Next current trends in artificial intelligence. सबसे ऊपर generative AI, basically AI that instead of providing any decision, it generates whether it generates image, text, audio, or video. That is generative. जैसे आपका chat GPT हो गया, Gemini हो गया, Perplexity हो गया. All those are generative AI. Then you have multimodal AI. This is not model, not E. We should not be there. A would be there. Model. मतलब वो AI जो आपको multiple output types दे. जैसे आपका chat GPT होता है एक ही prompt से आप इमेज भी जनरेट करते हो टेक्स्ट भी जनरेट करते हो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स का आउटपुट दे रहा है. So those kind of AI are called multimodal AI. Then you have explainable AI. अब explainable AI क्या है? AI जो अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की कैसे वो उस डिसीजन पे पहुंचा, क्यों वो प्रेडिक्शन कर रहा है या रिकमेंडेशन दे रहा है, that AI is explainable AI. वो अपना डिसीजन प्रोसेस मेकिंग प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है. Then automated machine learning, शॉर्ट में ऑटो एमएल. ऑटो एमएल में बेसिकली जो एमएल का प्रोसेस है वो ऑटोमेट करती है, उसको ऑटोमेटिक करती है. सो डेटा यू जस्ट गिव द डेटा या वो डेटा में कलेक्ट कर सकता है उसको. सो कलेक्ट द डेटा, उसके साथ उसके बाद उसको जो स्टेप्स करना है वो करेगा, मॉडल क्रिएट करेगा, मॉडल ट्रेन करेगा, सब कुछ ऑटोमेटेड. सो दैट इज योर ऑटो एमएल. देन एज AI. एज AI में दो चीजें हैं, एज कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एज कंप्यूटिंग में क्या है, यू हैव टू सेट अप सिस्टम or networks in very remote locations जहाँ पे हार्डवेयर पहुँचाना थोड़ा मुश्किल है. So with the help of cloud computing and all, you your processing power पहुँचाना. So that is edge computing. ये remote locations पे आपका access servers set up करने हैं with the help of cloud computing. तो वो हार्डवेयर पे भी प्राइस हेवी नहीं रहेगा, लाइट रहेगा हार्डवेयर वाइज. और उन सिस्टम्स पे जब आप AI प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करते हो, देन दैट इज बिकम द पार्ट ऑफ एज. एंड एट द एंड एथिकल AI. नाउ एथिकल AI जो है बेसिकली AI which follows human moral values.
और ह्यूमन एथिकल वैल्यूज जो है, अगर वो एआई फॉलो करता है देन इट इज कॉल्ड एथिकल एआई। ये जो टर्म्स है एथिकल एआई, एक्सप्लेनेबल एआई, ये लास्ट 10 इयर्स में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि लास्ट 10 इयर्स से ही जनरेटिव एआई बहुत पॉपुलर है। 10 साल पहले शुरू हुआ था जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी से जनरेटिव एआई नहीं शुरू हुआ, उससे पहले से 2015-16 के आसपास। So चैट जीपीटी आपको पता है, little bit information developed by OpenAI। OpenAI company है, उसके सीनियर्स एनवायरनमेंट। So GPT is developed by OpenAI, November 2022 में launch हुआ था, and built on OpenAI GPT-3 language model। और उसके साथ साथ यूजर्स को सुपरवाइज एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग, ये हम मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे। सुपरवाइज लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का टाइप है, सो वी विल डिस्कस इट। रिइंफोर्समेंट लर्निंग भी वही हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग का अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो फीडबैक बेस्ड लर्निंग या रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग। तो उसमें बेसिकली जो आपका एआई जो मशीन है, अगर वो सही सीख रहा है तो उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, अगर वो गलत सीख रहा है तो उसको नेगेटिव फीडबैक मिलता है। तो उस तरीके से वो लर्न करता है इन सिंपल टर्म्स। तो मैं उसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो दैट इज योर रिइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इसमें बड़ा फेमस एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट, ये लॉन्च हुआ था नवंबर 2022 में, अराउंड February 2023, एंड ऑफ February और इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च माइक्रोसॉफ्ट का एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है इंडिया में। सो उसमें सत्य नदेला आए थे। सो वहाँ पे उन्होंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि टॉप 10 ब्रेकफास्ट सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में कौन से हैं? तो उसने लिस्ट किया। अब जो सत्य नदेला का फेवरेट ब्रेकफास्ट था, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, वो उस लिस्ट में टॉप 10 लिस्ट में नहीं। सो सत्य नदेला ने उसको करेक्ट किया कि नहीं, ये ब्रेकफास्ट भी होना चाहिए, ये क्वाइट फेमस है, बहुत लोग पसंद करते हैं। सो आफ्टर दैट तो चैट जीपीटी ने बोला ठीक है, आई इंक्लूड दिस आल्सो एंड आई करेक्ट मायसेल्फ। और उसके बाद अगेन जब सत्य नदेला ने क्वेश्चन पूछा तो उनका जो ब्रेकफास्ट था बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी टॉप 10 लिस्ट में। सो फिर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये चीज जो है, इसका मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है अगर जब चैट जीपीटी से मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता हूं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स एरर रहता है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बात करवाओगे चैट जीपीटी से तो उसको ज्यादा ही है, तो उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन डिफरेंट फील्ड्स। So starting with healthcare, so applications of AI in healthcare. So सबसे पहले rare disease diagnostics and treatment। आपके पास हर डिजीज के लिए कौन सा टेस्ट होता है वो सबका इंफॉर्मेशन रहता है, ये उसका डेटा भी आपको मिल जाएगा। और हेल्थ केयर का जो डेटा है, हॉस्पिटल्स का जो डेटा है, वो पेशेंट्स का डेटा है। सो उसके लिए अलग परमिशंस वगैरह रहते हैं, बट डेटा इज अवेलेबल। सो वो टेस्ट का डेटा यूज करके आप यू कैन डायग्नोस डिजीज। सो नॉट जस्ट रेयर डिजीजेस, नॉर्मल डिजीज डायग्नोस्टिक्स भी आप कर सकते होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेस्ट रिजल्ट्स हैं, एमआरआईज हैं, एक्सरेज हैं, उनको एनालाइज करके भी आप यू कैन डायग्नोस डिजीज। एंड बेस्ड ऑन द डिसीज उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। Then lot of other health monitoring and variables are there.
एप्पल वॉच है, आजकल जो बहुत सारी जो डिजिटल वॉचेस हैं उसमें हार्ट रेट मॉनिटर वगैरह रहते हैं। So वो सब भी AI का यूज है। Then AI रोबोट असिस्टेड सर्जरी इज देयर। इंडिया में तो बहुत कम है, ना के बराबर है। रोबोट असिस्टेड सर्जरीज आर slowly increasing in India, but not at very fast pace. बहुत फास्ट है, क्योंकि उसमें इशू हो सकते हैं। और जो भी रोबोट असिस्टेड सर्जरी होती है उसमें साथ में स्पेशलिस्ट सर्जन से इन्वॉल्व होते हैं। कुछ भी हुआ तो they can take it. कुछ भी अगर गलत किया हो तो they can take it. So AI रोबोट को रोबोट में AI लगा हुआ तो AI will help the robot to do the surgery. अभी जो रोबोट सर्जरी सर्जरी को रोबोट को जो है फिंगर से हैंडल करता है। Then cyber security है, और cyber security अलग ही सेक्टर है जिसमें आप AI का यूज कर सकते हो। यहाँ हेल्थकेयर के हिसाब से स्पेशली आफ्टर, क्योंकि अब तो हॉस्पिटल्स में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिजिटल, सो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की जरूरत ज़्यादा हो जाती है और वो इम्पोर्टेंस जो है इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं रैंसमवेयर का सबसे बड़ा बिकॉज दे took control of many hospitals. इंडिया में तभी थोड़ा कम होता है, यूएस वगैरह में नहीं होता है। So medical diagnosis is there, virtual nursing assistance is there. आपको चोट लगी है, नर्स अवेलेबल नहीं है, रोबोट AI रोबोट जो है उसके हेल्प से आप you can take the first aid वगैरह. So that kind of और basic diseases, cold और flu सब के लिए disease के लिए recommendation के लिए you can use virtual nursing assistance. दूसरी जगह रिडक्शन, सो AI के हेल्प से जितना आपको दवा खानी है जिस टाइम पे खानी है उतनी आप खाओगे। वो आप रिमाइंडर वगैरह भी सेट कर सकते हो, बट उसको भी कभी कभी रूप से गलती होती है, भूल जाता है बस उनकी आदत है। अलार्म लगा है तो अलार्म के हिसाब से कभी नहीं उठते, अलार्म के बाद ही उठते हैं। अलार्म भी बंद कर देते हैं उसके बाद भी 5-10 मिनट बाद सो जाते हैं। ये हमारी आदत है। तो रिमाइंडर भी we do not strictly follow. So इसमें AI का यूज कर सकते हैं। कैंसर रिसर्च वगैरह में आप AI का यूज करते हो, एक्सरेज हैं, एमआरआईज हैं, उसके बेसिस पे आप यू कैन विद द हेल्प ऑफ AI एनालाइज की जो कहीं ट्यूमर वगैरह नहीं है कि नहीं, अगर ट्यूमर है तो इज इट डेंजरस, इज इट लाइफ थ्रेटनिंग, इज इट कैंसरस और नॉट। सो कैंसर रिसर्च में इस एस्पेक्ट को थोड़ा आगे बढ़ेगा, भी स्किल personalized healthcare plans. So a lot of things you can do with the help of AI. Drug development में भी AI का यूज कर सकते हो। उसको AI को सारा केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, फिर हर केमिकल का ड्रग्स में जो केमिकल्स यूज होते हैं जनरली जो कॉम्बिनेशन यूज होते हैं उसका अगर एडवर्स रिएक्शन होता है तो क्या हो सकता है, वो सब बता के विद द हेल्प ऑफ AI you can create drugs, we can help in drug development. Then the other sector, banking and finance. So उसमें process automation है, credit card and loan decisions है, past data है, आपका जो transaction history है बैंक के पास, आपका credit score है बैंक के पास, वो सब को analyze करके और past में जिसको लोन दिया है उसमें से कितनों ने टाइम पे ईएमआई भरा है, कितनों ने नहीं भरा है, तो उसके लिए जितना टाइम पे भरा है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो सब एनालाइज करके फाइंड आउट कर सकते हैं आपका ये है। उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए या लोन मिलना चाहिए, वो भी डिसीजन आप विद द हेल्प ऑफ एआई ले सकते हैं। Then you have anti fraud system, fraud detection basically,
आइडेंटिटी फ्रॉड हो या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो, वो सब होता है। पहले क्या होता था, अगर आपने ट्रांजैक्शन किया, सपोज आपका जो डेली ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड पे वो 100-200 रुपये का या 400 रुपये का, मतलब अप टू 1000 के नहीं, मैक्सिमम 1000 का। बट सडनली एक दिन आपको पैसे की ज़्यादा जरूरत हुई तो यू मेड अ ट्रांजैक्शन ऑफ 5000-6000। सो इमीडिएटली पहले होता था, इमीडिएटली आपके पास फोन आया, ये ट्रांजैक्शन जो है ये हमारे पास ये ट्रांजैक्शन का इन्फॉर्मेशन है कि 5000 के 6000 का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से, और ये ट्रांजैक्शन आपने किया। अब अगर आप हाँ बोलोगे तो ठीक है, वो समय इग्नोर कर देगा। अगर ना बोलोगे तो उसको तुरंत बोलेगा, अगर आपने नहीं किया तो सीधा FIR होगी और अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा देगा। अब मैसेज आता है और उसमें आपसे पूछता है या नोटिफिकेशन आता है मेल पे कि आपने किया, अगर आपने किया तो नीचे यस भी सेलेक्ट करिए, आपने नहीं किया तो नो सेलेक्ट करिए, तो उसके बेसिस पर तुरंत क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देगा, उससे कोई फर्दर ट्रांजैक्शन। So ये सब आपका एंटी फ्रॉड सिस्टम के अंदर आता है। रिस्क मैनेजमेंट, सेल्स फोरकास्टिंग, आपका इस साल के पहले तो क्वार्टर का सेल्स आपके पास तब उससे पुराना भी सेल्स का डेटा आपके पास है, तो उसके बेसिस पे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगले क्वार्टर में कितना सेल्स होगा, उसके अगले क्वार्टर में कितना सेल्स हो सकता है। ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह में भी यूज कर सकते हो, पर्सनलाइज बैंकिंग में एआई का यूज होता है। देन यू हैव स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन। नाउ स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन जो है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क इन एआई। क्या रीजन हो सकता है इसका? इंडिया इसलिए इसको डिफिकल्ट टास्क कहते हैं बिकॉज आपके पास पास्ट डेटा है। तो स्टॉक मार्केट जो है सिर्फ डेटा पे डिपेंड नहीं करता है, पास्ट डेटा पे डिपेंड नहीं करता है, साथ साथ वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस टाइम, अगर कुछ वॉर चल रही है तो वो भी आपके स्टॉक मार्केट के वैल्यू को अफेक्ट करेगा। उसके अलावा अगर किसी कंपनी से रिलेटेड कोई रूमर है तो उससे भी स्टॉक मार्केट अफेक्ट होता है। पार्लियामेंट में कुछ हुआ, डिस्कशन हुआ, उससे भी स्टॉक मार्केट अफेक्ट करता है। लॉट ऑफ फैक्टर्स आर which affect stock markets. So सब फैक्टर को कंसीडर करना इन डेटा इज क्वाइट डिफिकल्ट। आपने सुबह प्रेडिक्शन की कल स्टॉक मार्केट वैल्यू होने के लिए कुछ होनी थी, आपने जो प्रेडिक्शन किया उसके 15 मिनट बाद एक नई न्यूज आती है कि कहीं और चाहिए, 11 बज रहे हैं फिर और चाहिए, तो वो प्रेडिक्शन आपकी नहीं, तो वो प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट रहेगी, उसकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। सो इसलिए स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस का जो प्रॉब्लम है, इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लम। अब जनरेटिव एआई के यूज करके हम ये सब चीजें हैंडल कर सकते हैं, बट स्टिल इट विल नॉट बी लाइक मोर देन 90% हैंडल। और एआई में जनरली जो मॉडल यूज होते हैं, डिप्लॉय होते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ देम आर मोर देन 95% है, तभी डिप्लॉयमेंट होता है, तभी उसका यूसेज होता है, अदरवाइज यूसेज नहीं होता। ई कॉमर्स में है काफी एप्लीकेशंस है, कस्टमर सेगमेंटेशन है, आपका जो बाइंग पैटर्न है, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदते हो या कस्टमर्स क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उसके बेसिस पे कस्टमर्स का सेगमेंटेशन किया जा सकता है। ये जनरली किसी टाइप के प्रोडक्ट्स है, वो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वही पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट उनको एडवर्टाइज भी होंगे और उनको रिकमेंड भी होंगे। सो दैट इज कस्टमर सेगमेंटेशन। मतलब
एज ग्रुपिंग वाइज या उस हिसाब से अलग अलग सेगमेंट्स में कस्टमर को सेपरेट कर दिया जाता है। देन इंटेलिजेंट डिमांड फोरकास्टिंग। अभी किसी प्रोडक्ट आपके पास है, प्रोडक्ट का डिमांड का डेटा, उसका सेल्स का डेटा, उसके बेसिस पे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे कितना डिमांड बढ़ सकती है इस प्रोडक्ट। सो उस बेसिस पे आप प्राइसेस भी चेंज कर सकते हो उस प्रोडक्ट की। दैट इज योर इंटेलिजेंट प्राइसिंग। डिमांड प्रेडिक्ट करना, दैट इज योर इंटेलिजेंट डिमांड फोरकास्टिंग। ये कितना डिमांड हुआ आगे चल के उस प्रोडक्ट का, अभी या पहले जो डिमांड कैसे कैसे बढ़ रही है या घट रही है, उसके बेसिस पर आगे चल के कितना डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। दैट इज योर इंटेलिजेंट डिमांड फोरकास्टिंग। पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। आपने Amazon फ्लिपकार्ट वगैरह यूज किया होगा। Amazon में you get two scripts. People who buy this product also buy this. इसमें आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखते हैं एंड उसके साथ साथ एक और आता है you can also buy this. ठीक है। और एक और चीज आती है Amazon में, वो प्रोडक्ट जो आपने ऊपर किया होगा उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन में दो तीन प्रोडक्ट होते हैं आपको, क्योंकि वो जनरली कॉम्बिनेशन में खरीदे जाते हैं इसलिए वो ऐसा है। सो दैट इज योर कस्टम पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। या आपका जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे कौन सा प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो उसका रिकमेंडेशन। देन वी हैव कंपटीटर प्राइस कंपेयर। आप कुछ अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, सो Amazon वगैरह यूज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि वैसे जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं दूसरे कंपनीज का उनका क्या प्राइस है, उसके बेसिस पे आप क्या प्राइस रख सकते हो which would be profitable for you. So you can do that with the help of AI. Then two things are there: customer lifetime value and customer churn production. दोनों more or less एक ही चीज फाइंड आउट कर रहे हैं, that is कि जो कस्टमर है वो कितने टाइम तक कस्टमर है। लाइफ टाइम वैल्यू में चेक करें कितने टाइम तक कस्टमर रहेगा, चार्ट में चेक करें कब वो कस्टमर नहीं रहेगा, कितना जल्दी वो कस्टमर नहीं रहेगा, कितना जल्दी वो वेबसाइट को छोड़ देगा, प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगा वेबसाइट से। सो दोस थिंग्स you can also predict with the help of AI. Automated content generation. आजकल तो Amazon पे before you see the reviews उसके ऊपर एक short summary रहती है reviews की, पॉजिटिव रिव्यूज है, नेगेटिव रिव्यूज है, अगर ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज हैं तो क्या क्या नेगेटिव्स हैं, तो वो समरी रहती है। या जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आता है वो भी ऑटोमेटिक जनरेटेड रिव्यू होता है, टेक्स्ट वगैरह वो जो भी कंपनी की वेबसाइट पे स्पेक्स वगैरह होती है तो उसका यूज करके वहाँ पे जनरेट करते हैं। And you can analyze different products based on their images. अगर आपके images भी रहते हैं e-commerce website, and the last sector that we are going to discuss, that is agriculture. अब agriculture में सबसे पहले we can predict crop as well as the price of the crop. मतलब कितनी फसल है, आपके पास पुराना डेटा है कि पिछले 5 साल में कितनी कितनी फसल हुई है, उसके बेसिस पे और वेदर क्या हो सकता है, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर क्या हो सकता है, कितनी बारिश हो सकती है और पिछले साल कितनी बारिश हुई, वो सब फैक्टर्स यूज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि इस साल कितनी फसल हुई है या अगले साल कितनी फसल हुई है। और प्राइस भी आपके पास डेटा है पुराना कि 5 साल में फसल कितने कितने प्राइस पे बिकी और वो प्राइस सेट करने में क्या क्या फैक्टर्स है, तो उसको यूज करके आप यू कैन प्रेडिक्ट कि इस अभी कितने में फसल बिकेगी या अगले साल
फसल भी अच्छी फसल भी व्हाट इज द क्रॉप यील्ड और उसके बेसिस पे कीमत हो सकती है उस फसल की, वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। देन रोबोट्स, एग्रीकल्चर रोबोट्स, हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए आप रोबोट्स, एआई रोबोट्स यूज कर सकते हो फसल काटने के लिए या फसल बोने के लिए भी रोबोट्स वगैरह यूज कर सकते हो higher volume and faster pace. Then crop and soil monitoring, उसके लिए भी आप एआई का यूज कर सकते हो। आप फसल पे अलग अलग जगह पे कैमरा लगा सकते हो, कैमरा का यूज करके आप फसल को एनालाइज कर सकते हो ओवर द टाइम। अगर कहीं कीड़ा लग रहा है तो इस कैमरा से आपको दिखा कि कहाँ कीड़ा लग रहा है, तो सिर्फ उसी एरिया में आपको पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो डालना है सिर्फ उसी एरिया में डालना है, बाकी सारे एरिया में नहीं डालना, बाकी जगह पे वो डिजीज नहीं है। उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि कौन सी डिजीज है, उसको टैकल करने के लिए क्या करना है, वो चीज भी आप एआई के हेल्प से कर सकते हो। सो क्रॉप्स एंड सॉइल मॉनिटरिंग हो गया, डिजीज डायग्नोसिस हो गया, एंड देन इंटेलिजेंस पे वही जहाँ पे इशू है, जहाँ पे कीड़ा लग रहा है, जहाँ पे वीड्स हो रहे हैं ज़्यादा, वहाँ पे आप सिर्फ वहीं पे आप पेस्टिसाइड या फंगिसाइड या फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। आपको पूरे खेत में डालने की जरूरत नहीं पड़े यूज केस में, तो आपका जो है फसल की फसल को भी असर पड़ेगा, अच्छी फसल बनेगी और उसके साथ साथ आपका जो उसका पेस्टिसाइड का यूसेज है, जो अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड है सॉइल में, वो भी कम होगा, तो आपकी मिट्टी है वो भी जल्दी खराब नहीं होगा। देन प्रेडिक्टिव इनसाइट्स, जैसे कौन सी फसल उगाने के लिए सही टाइम क्या है, बीज का कौन सी फसल का बीज डालने का सही टाइम क्या है। अभी तो एक तो किसान ऐप है जिसमें आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हो कि कौन सी फसल हो रहा है, बेस्ड ऑन की मिट्टी कैसी है उसके बेसिस पे और वेदर के बेसिस पे, या किस फसल को बीज डालने का सही टाइम क्या है। सो वो सब सवालों का जवाब देने के लिए मतलब किसान ऐप के थ्रू एक्सपर्ट्स हैं जिससे आप बात करें, वो आप एआई के हेल्प से भी कर सकते हैं। सो दैट इज योर प्रेडिक्टिव इनसाइट। सो एआई का जो यूज है वो सिर्फ एक ही जगह एक ही सेक्टर में नहीं है, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ उसका यूज है। एंड कोई भी आप सेक्टर उठा लो, आपको हर सेक्टर में एआई का कुछ ना कुछ यूसेज दिख जाए। सो एआई इज इम्पोर्टेंट, और इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग इन एआई, आपको एआई की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एआई जो हर फील्ड में हर सेक्टर में यूज होगा, whether it is architecture, whether it is civil, whether it is mechanical, हर जगह पे एआई का कुछ ना कुछ यूसेज है, which automates, which improves the performance. So this was the introduction to AI. Okay. After lunch, we will start with Python basics, and then data process. तुमचा आता लंच ब्रेक आहे, त्या सिस्टीम वरती बसलाय ते शट डाउन करा आणि 7:02 वाजता परत सेशन सुरू